Go ahead. Assalamu alaikum and good afternoon. I'm your host Wajiha Ashfaq, and I welcome you to our webinar series hosted by the Center for Law and Security. Today's topic is the peace prospects between Iran and the United States. We have two esteemed guests here with us to discuss the subject matter. Firstly, we have Ambassador Ali Sarwar Naqvi, the Executive Director at the Center for International Strategic Studies, Islamabad. Secondly, we have Dr. Farhan Hanif Siddiqui, who is a professor at School of Politics and International Relations, Quaid-e-Azam University. We are also joined by the Executive Director of Center for Law and Security, Mr. Rahman Azhar. The format for this webinar will be bilingual. Now we can proceed with the discussion. My first question is to Ambassador Ali Sarwar Naqvi. Sir, why do you think have the diplomatic efforts repeatedly failed between the United States? We cannot call it failed. You see, diplomatic efforts don't produce a result overnight. It takes time, and efforts are going on. No, neither of the two sides are involved in the conflict have said that they don't want to continue the negotiations. That is failure. This is not a failure. This is a prolongation of the discussions, and Pakistan is making great efforts. You see, Pakistan has been instrumental in the entire mediatory process. When on April 7th, bombs were being hurled on Tehran and Isfahan and Zahedan and all the major cities, Kirman, Mashhad, the entire sort of situation was very gloomy. And then missiles were being launched against Israel. At that juncture, nobody expected that there will be ceasefire. But the ceasefire was agreed upon with Pakistan's efforts. Secondly, we brought the two warring sides, Iran and US, on the negotiating table in Islamabad, April 11th and 12th. Ceasefire again threatening to begin the war and resume the war and bomb Iran. He has made some very provocative statements about obliteration of Irani civilization and all that. Right. So then also we intervened, and President Trump admitted that it was at the request of Pakistan as well as Saudi Arabia and Kuwait and UAE that he has decided not to launch an attack on Iran. So the diplomatic efforts, and after that, hectic diplomatic efforts are being made by the Interior Minister, Mr. Mohsin Naqvi, who has been to Tehran a number of times, and it is still ongoing. So I don't think the diplomatic Right. efforts have failed. राइट अभी भी बहुत कोशिश हो रही है बट फरहान साहब वी हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स और हमने देखा है कि कई दफा क्लेम्स भी किए गए मीडिया में भी ये खबरें आई कि बहुत नजदीक पहुंच गया है आज या कल की जो है वो बात होती रही लेकिन फिर जो है वो चीजें वापस जो है वो जाती रही कौन से इश्यूज हैं यू फील के जिन पर मामला अभी तक जो है वो अटका हुआ है एंड दैट प्रोबेबली अगर कोई मुमकिन माहिदा होता है तो उसका इन्हिसार भी उसी पे होगा और अगर कोई डेडलॉक रहता है तो दैट डिपेंड्स ऑन दोज फैक्टर्स एज well. I think between Iran on one hand and Israel and US on the other, I think the major issue is of goal incompatibility. So if you look at the nature of negotiations, अगर आप उस पर नजर डालें तो इसराइल और यूएस की तरफ से जो उनका जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, meaning they want a complete disarmament when it comes to Iran. And Iran and the JCPOA, which was signed earlier, 2015, वो एक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट. तो ईरान के जो मौकफ है वो ये है कि हम एक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक फाइल, और यही जो है वो इंटरनेशनल जो मेजर पावर्स है रशिया और चाइना का भी है कि यू कैन डिले द ईरान्स acquisition of nuclear weapons, but you cannot deny Iran the acquisition of a nuclear weapon at a later stage. यही JCPOA था.
I mean, you can delay Iran's acquisition of nuclear weapon. You cannot oversee that Iran does not have a nuclear weapon. That is never going to happen. तो ये जो यूएस और इसराइल की डिमांड है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए, I think that this is one of the major, so to speak, stumbling blocks in the negotiations, and अच्छा how the Iranians and the Americans and Israelis on the other side view the nature of this conflict. दूसरी एक अहम चीज इसमें ये है जो बड़ी वाजे है कि जी Israel wants a complete and total war with Iran, and Iran wants a अच्छा complete and total peace with the US and in the Middle East at large. So what Iran desires is that we can come to an agreement, we can have a negotiated settlement with the US over the nuclear issue, with the Gulf states, and we can then have a new forum of regional stability in the Middle East. अच्छा Israel is the one which is the spoiler in this entire हाँ process because it wants this war to continue permanently. I think we should give Iran credit, as far as this war goes. इमेजिन करें कि कोई मुल्क हो, दो राइवल्स हो, और एक मुल्क जो है वो एक दूसरे मुल्क की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दे, जो ईरान तो के साथ प्राइमरीली हुआ. आप ये कह रहे हैं कि एंड जो न्यूक्लियर वाला इशू है वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, और दूसरा जो है वो फैक्टर जो है वो इसमें इसराइल बीइंग अ स्पॉइलर जो है वो इसको जो है वो रोक रहा बिल्कुल है. लेकिन बिल्कुल मैं जी. एम्बेसडर साहब, अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा चल रही है, एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, अगर कोई ऐसा मुमकिन हल होता है तो इम्प्रेशन ये है कि इसराइल डज नॉट वांट दैट, और ये फरहान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि दिस थिंग इज आउट देयर दैट दे वांट टू प्रोलॉन्ग द वॉर. विल दे लेट अमेरिका एक्सेप्ट सच अ डील, और फिर ये जो बात की जाती है कि उनका तो बहुत असर रसूख है, हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो? या अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि इजराइल की जो तबाही हुई है वो जब से इजराइल बना है 1948 में आज तक इस तरह की तबाही इजराइल की नहीं हुई है जैसे कि ईरानी मिसाइल से हुई है, ड्रोन से हुई है. यानी इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव, बेरशेबा, इलात, ये सारे शहरों पे मिसाइल्स बरसाए गए हैं, और वो बड़े ही वहां की आवाम बड़ी परेशान और सख्त हरासा है. तो इजराइल को चाहिए कि वो इस बात को मान ले कि ये जंग मजीद ना चले, लेकिन नेतन्याहू का दिमाग कुछ और ही किस्म का है. वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जंग चलनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं इस वजह से कि वो पावर में उसी वक्त तक है जब तक जंग चलती है, वरना फिर वो पावर में नहीं रहेगा. पर इजराइल इज जस्ट वन फैक्टर. मैं समझता हूँ असल मसला जो आपने कहा और वो जी सही है कि असल मसला न्यूक्लियर इशू है. ईरान का जौहरी प्रोग्राम ये 2003 में मसला शुरू हुआ था. 2006 में निगोशिएशंस P5+1 की शुरू हुई थी. मैं उस वक्त पाकिस्तान का एम्बेसडर था IAEA में, वियना में, तो मैं उस वक्त से वाकिफ हूँ. और ये एग्रीमेंट फाइनली 2015 में जाकर वो हुआ था साइन. उसको 2018 में ट्रंप साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब हम इससे निकल रहे हैं. तो उसकी दो वजह बताई थी, एक मिसाइल डेवलपमेंट ईरान की, और दूसरे सपोर्ट टू प्रॉक्सीज लाइक हमास, हिजबुल्ला एंड Houthis and all these other groups. तो वो उनको अब यही गले पड़ गया है, क्योंकि अगर JCPOA रहता तो ये झगड़ा ही नहीं होता. और अब ये इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि ईरान को अंडर इंटरनेशनल लॉ ईरान को हक है to have a peaceful users program under Article 4 of the NPT, और ईरान हक बजानिब है कि वो प्रोग्राम अपना उस हद तक रखना लेकिन चाहता है. एम्बेसडर साहब, ईरान की तरफ से बार बार जो रीएश्योरेंसेस थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने वो फतवा भी आया, और फिर ईरान जो है वो ईरान की पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन भी यही है कि प्रोग्राम तो है लेकिन हम वेपन्स जो है वो परस्यू नहीं कर रहे. सो बिल्कुल. व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इशू इज स्टिल देयर
کیونکہ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ تو ایک فساد ہے نیوکلیر والا جو ایشو ہے. اصل چیز جو ہے وہ ری ڈرائنگ آف دا میپ یا رجیم چینج یا لیڈرشپ کی جو ہے وہ چینج وہ چاہتے ہیں. جی ہاں، رجیم چینج تو بہرحال وہ چاہتے ہیں، اور ری ڈرائنگ آف دا میپ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. وہ بے شک چاہ رہے ہوں، لیکن وہ نہیں ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایران زیادہ طاقتور بن کے نکلے گا، کیونکہ باقی گلف کے ممالک جو ہیں وہ سب ایران کے طاقت سے گھبراتے ہیں، اور ایران سے ان کو مل کر مصلحتاً ان کو مفاہمت کرنی چاہیے، ورنہ یہ ٹینشن گلف میں موجود رہے گی. تو دوسرا مسئلہ جو ہے رحمان صاحب، جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، کہ جنگ کے دوران ہرموز کے آبنائے ہرموز کا جھگڑا کھڑا ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ ایران نے پہلے اس کا بلاکیڈ کیا، پھر ایران نے بلاکیڈ اٹھا دیا، لیکن پھر امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا جو ابھی تک قائم ہے. تو یہ اب جہاز نہیں آ سکتے، آمد و رفت نہیں ہو رہی، ساری دنیاوی تجارت پوری رک گئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کو بھی ڈسکس یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. تو حل ہے کہ ایک پہلے مسئلہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جنگ میں اب وہ ایک اور جو ہے وہ ایڈ ہو جو ہے وہ بڑا ایشو جو ہے وہ ہے، اور جنگ جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. میں رائٹ، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر دین وی ہیو اے کوشچن فار فرانس. جی ہاں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہے دونوں کے موقف میں، اور امریکہ کا موقف جو ہے وہ ایران میں، آپ نے جیسے کہا کہ رجیم چینج تو اب ان کو بھول جانا چاہیے. وہ چاہتے ہیں جوہری پروگرام ختم ہو جائے، وہ بھی ایران جو اس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کے حقوق میں رہے گا. اور کمپنسیشن لفٹنگ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورت ہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پروگرام ختم کرنا چاہتا ہے، ہرموز آبنائے ہرموز کو کھلوانا چاہتا ہے. تو اس میں ڈپلومیسی یا سفارتی بہت مشکل ہے، کیونکہ دو دور بہت ہی مختلف قسم کے موقف ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہے. بات ہے وہ کلیش ہے، تو سیولائزیشنل کلیش کو حل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. آئی تھنک وجیہ ہیز اے کوشچن. وجیہ پلیز گو ایڈ فرحان صاحب سے. Sir Farhan, how do you think the regional conflict in Lebanon impact the peace prospect? I think it is, part of Israel's, defense and security policy since to occupy territories of a pathway for maybe the Iranians and the Israelis/Americans to conclude or manage a deal with respect to the Strait of Hormuz. But Lebanon is just a subset of the larger conflict that is taking place. But do you see an attempt to redraw the maps with conflicts like these? Idea. Meaning it's something which could be an imagination of a person or a group, with extraterritorial ambitions, but these are only ambitions. To realize them, is an entirely different ballgame, number one. Plus, any attempts, if you could say that maybe attacking southern Lebanon or even attacking Iran is part of this great game of redrawing,
state boundaries, what will it result in? Complete chaos. So what happens to अच्छा energy supplies, oil supplies? What happens हम्म to neighboring like the Gulf countries and the attacks that they've endured, the attacks that Israel has endured? So any attempts at a project of redrawing territorial boundaries in the Middle East, the outcome is going to be strategically, economically, politically catastrophic, right? And I think हम्म one interesting lesson, I think, which a lot of commentators are जी speaking less about is everyone is हम्म drawing these lessons के जनाब ये देखें तो power politics is back और देखें जंगे वापस आ रही हैं और अब स्टेट्स हम्म में जो है वो नॉर्म्स की रेलेवेंस नहीं रही, लॉ की रेलेवेंस नहीं रही, किसी लीगैलिटी की रेलेवेंस नहीं रही। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखें कि इकोनॉमिक फैक्टर कितना अहम है। The only reason why there is this राइट stalemate and this deadlock is because of how geoeconomics in the world's energy supplies have hit a critical mark. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो जंगें होती हैं और ये जो इमेजिनेशन होती है कि जी हम मैप्स रीड्रॉ कर लेंगे या तो एक ग्रेटर इसराइल बना लेंगे या एक न्यू मिडिल ईस्ट बना लेंगे, हम्म इसका इसके माशी असरात कैसे होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, बिकॉज वी लिविंग इन अ ट्रूली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, राइट? राइट अच्छा नकवी साहब नाउ लुकिंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी कि अगर कोई ऐसा मुआहदा होता है तो उसके बाद नंबर वन जो अमेरिकन प्रेजेंस है, दो तीन बड़े क्वेश्चंस हैं, अगर ब्रीफली आप इनको एड्रेस कर दें। नंबर वन, अमेरिकन इंटरेस्ट एंड प्रेजेंस इन द रीजन आपके ख्याल में रहेगा या नहीं रहेगा? दूसरा, हाउ डू यू सी ईरान और गल्फ के जो है वो रिलेशनशिप? और तीसरा जो पॉइंट है कि पाकिस्तान के व्यू से हाउ वाइटल इट इज फॉर पाकिस्तान कि अगर इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है और हम पर उसका क्या असर पड़ सकता है? या देखिए थ्री देखिए थिंग। बिल्कुल सही रहमान साहब, अगर ये ऐसा मुआहदा होता है तो जी अमेरिका का असर रसूख इस खत्ते में काफी कम हो जाएगा, इस वजह से कि ईरान की अच्छा बातें उनको माननी पड़ेंगी, और अगर नहीं मानेंगे तो डेडलॉक कंटिन्यू करेगा। अलबत्ता वो सारी बातें तो नहीं हम्म मानेंगे, उसमें निगोशिएशन के प्रोसेस में हमेशा ये होता है कि कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ नहीं। दूसरे जो गल्फ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, वो अब अमेरिका से बहुत बदजन हैं। वो उनको अमेरिकी बेसिस से उनके सिक्योरिटी को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, बल्कि नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ईरान ने उनके बेसिस पे हमले किए हैं। तो ठीक मेरा ख्याल है कि अमेरिका से वो चूंकि बदजन अच्छा है, और उस वजह से काफी यहाँ तब्दीली आएगी। और इस पस मंजर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान विल बेनिफिट, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान हैज ऑलरेडी signed a defense agreement with Saudi Arabia, which was a हम्म formalization of our old association with Saudi Arabia. हम्म It is the only country in the Gulf where we have troops. We have always had troops for the protection of the holy places. हम लोग कहते हैं कि मक्का मदीना चूंकि वहां पे हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी कौम हमसे तवक्को रखती है। दूसरे पाकिस्तान को, हम्म दूसरे भी खलीज के ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तान की तरफ भी देख सकते हैं। और फिर एक इन एनी अच्छा केस एक ग्रुपिंग बन रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, ये सारों के मिलके ये क्वाड जी जिसको कहा जा रहा है, इसके नाम बहुत सारे जी दिए जा रहे हैं, बट ये प्राइमरीली जी इसको क्वाड कहा जा जी। रहा है। जी तो ये भी एक सूरत हाल डेवलप होगी। मैं समझता हूं कि नेट लूजर अगर देखा जाए तो वो हम्म होंगे अमेरिका और इजराइल। इजराइल क्यों? इसलिए कि इजराइल की ये सारी हरकतें जो हैं, ये ईरान ने काउंटर की हैं, और उनके यहाँ सेंसरशिप है, इसलिए उन्होंने कोई उनकी खबर बाहर नहीं आई है। वो हम्म स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इसराइल में ऑब्जर्व हो रही है। तो राइट इसराइल में जो तबाही है, वो तो जाहिर है उन लोगों को अब एक एहसास इस बात का होगा कि वो पंगा ना ले, जैसे कि आम फाहम ठीक जुबान में कहा जाता है। हम्म तो मैं समझता हूँ कि इसराइल विल बी ए लूजर। हम्म एंड बहुत अहम बात है रहमान साहब, अमेरिका में
اسرائیل کے بارے میں پھر سے نئی سوچ آ رہی ہے. جو ینگ جو جوز ہیں وہ کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. نیو یارک میں ممدانی جیتا اس لیے کہ جیوز نے اس کو سپورٹ کیا ہے, نیو یارک سٹی کے جیوز نے, اور وہ یہودی سینیٹرز اور کانگریسمین بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, ہم کیوں اتنی ایڈ دیتے ہیں. تو یہ پہلی بار میں دیکھ رہا اچھا. ہوں, میں امریکہ میں 2 بار رہا ہوں, میں بہت وقت میں نے امریکہ میں گزارا ہے, کہ امریکہ میں اسرائیل کے متعلق سوال اٹھ رہے ہیں, اور اب اس کی وہ حیثیت اور نہیں ابھی رہے گی ان جو کی کہ یہ ایڈمنسٹریشن میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, بیکاز یہ ایکزیوس کی جو سٹوری ابھی ہم نے کل جو ہے وہ دیکھی ہے, دیٹ آلسو سورٹ آف ریفلیکٹس کہ ایڈمنسٹریشن بھی شاید کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ طرح سے معاملات کو جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے. بٹ فرحان صاحب, پرابلم وہی ہے, ایک سپر پاور کس طرح سے نیگوشیٹ کرے گی یا کنسیڈ کرے گی اف دے ہیو ٹو لوز سم تھنگ ان اے کانفلکٹ, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سپر پاور از دیٹ پاور دیٹ ٹیلز یو کہ بھائی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہوگا. یور ٹیک آن دس. جی بالکل, یعنی یہ بھی ایک بڑی سمپلسٹک سی ہماری assumption ہے کہ گریٹ پاور بیکاز دے آر ملیٹریلی پاورفل دے کین گیٹ واٹ دے وانٹ. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو امریکنز کو ویتنام میں ڈیفیٹ نہیں ہوتی, سوویٹس کو افغانستان میں نہیں ہوتی, امریکہ کی جو اسٹریٹجک آپریشن سے افغانستان عراق میں وہ فیل نہیں ہوتے, اور اب تک امریکنز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول چکے ہوتے. So I think the embarrassment for the Americans now is, and the reason why there is no face saving for them at this moment as we speak, is that despite claiming victory, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी हमने अपने जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे अचीव कर लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे लीडरशिप को भी चेंज कर दिया और जो की लीडरशिप थी उसको भी हमने कत्ल कर दिया, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया. But the one thing that they've not been able to do is open up the Strait of Hormuz. And this tells you that this entire policy of, making or compelling the Iranians to back down has only reinforced the Iranians. And the Americans have, failed, militarily, strategically. And this entire project Right. of attacking Iran has backfired. So the thing is now, اور وہ irony ہے جو ابھی وہ یہی ہے کہ the only reasonable way out of this crisis is for the Americans and the Iranians to come to a negotiation, to bargain with each Right. other, because a military solution is just not viable. اور یہ جو لیٹر آف انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے, ڈو یو تھنک اٹ ول بی ایبل ٹو سارٹ آف کلوز, وہ ہم وہ بزنس کی ٹرم میں جو کہتے ہیں نا کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے کلوز ٹرانزیکشن, تو اگر لیٹر آف انٹینٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو جنگ ہے دے ول فائنڈ اے کلوزنگ فار دس؟ Yeah, meaning you see, there's a lot to build upon. اس پہ بڑی بات ہوئی میڈیا میں, اور اچھا. پہلے بھی بات ہوئی کہ جی it took 2 years for the Americans, or many even more years for the Americans to come to the JCPOA. The point is that the Americans and the Iranians were already talking after June 2025 last year. ٹھیک ہے, ان کی نیگوسیشن تھی. اور پھر جب یہ خبر آئی کہ جی the Iranians and the Americans are very close to a deal, آپ کو پتا ہے پھر اگلے دن کیا ہوا, the Israelis attacked Iran. The same happened in January this year. That when when the negotiations were taking place, that the day the news came out, the optimistic news, that the Americans and the Iranians have come close and they're optimistic about a deal on the nuclear issue. That is where the attacks by the Israelis took place. Right. So the point is that the framework is already there, but because Israel has such a decisive and defining influence in American politics and over Trump and his constituency, the real problem is actually Israel. It is not the deal itself. ٹھیک, رائٹ. وش وی کوڈ کنٹینیو ود دس, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی ڈسکس ہونے والی ہیں, بٹ آئی تھنک وی مسٹ کنکلوڈ ہے. وجیہہ, اوور ٹو یو جی. Thank you so much for such a wonderful and comprehensive discussion.
Our guests have provided us with a great deal of perspective today, and we hope to see you both, Sir Dr. Right. Farhan Hanif and Ambassador Ali Sarwar Naqvi, with us again soon. Right. Thank Ambassador you. Saab, thank you so much. Farhan Saab, it Thank was a pleasure Thank you. having you. Ji, thank you so Thank much. you. Shukriya. Thank Thank you. you. बहुत Thank you. शुक्रिया. Thank you.